Today, children, we will study about the force on a charged particle when it is placed in a magnetic field. Right? You all know that there are two types of the charges, positive and negative. ठीक है? Positive charges किस किस से बनेगा? हाँ, अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स का स्ट्रीम है, हाँ, तो इन सब से पॉजिटिव चार्जेस होती है ना? And if you have got the negative charges, of course, it is stream of electrons. And when I place this charge particle in an external magnetic field, what will happen? Yeah. Yeah, you know, right. You got it right. It will experience a force. Yeah. In today's class, we will learn how much is the force and which direction the force will act. What are the conditions the force will act? Maximum. What will be the conditions that the force is not acting at all? All this we will be studying in today's small class. Okay, chalo. So I share my screen here. So we have got a charged particle. And in this charged particle, I take this as Q, and Q is the charged particle you have got, and it is placed now in an external magnetic field. I'm saying that this is the external magnetic field. I'm keeping this as the uniform magnetic field. I'm representing it as the magnetic field B. Now, this charged particle is having a magnitude of Q, and it is also having a speed of V, and it is entering this magnetic field, making an angle of theta with the magnetic field. Now this is going to experience a force. लगेगा इस पे force. तो कितना? ठीक है? तो experiment से ये पाया गया है. We got it from the experiments that the force which is acting on this charged particle is directly proportional to the magnitude of the charge. मतलब जितनी चार्ज की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी. एंड सेकेंडली इट इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन द velocity of the particle. मतलब it will enter with the velocity v. So what is the velocity? It will depend on that, right? And the next is it is also going to depend upon the sign of angle theta. That is the angle between किस किस के बीच में? It is between the velocity vector and the magnetic field vector. And दोनों के बीच का जो angle है theta is the angle between the magnetic field and the velocity. See, it is the angle between the two vector quantities. कौन-कौन है इसमें vector quantity? Magnetic field is a vector quantity and the velocity is also a vector quantity. The angle between these two vector quantity, and that we take it the sign value. So if I combine all this, we will get that the force which is taken as F, and that is proportional to Q, V, B multiplied by sine theta. And if I take the SI unit systems, if the units I'm taking is SI unit systems, or maybe CGS also it is valid. So F is equal to Q, V, B sine theta. So what are the factors on which this force is depending? This force is depending upon, the first is the charge. It is depending upon the charge. The secondly, it is depending upon the velocity's magnitude. The third is that it is depending upon the magnetic field, the external magnetic field in which it is kept. And the other factor is the angle theta. That is the angle between the magnetic field and the velocity vector. This is the factor on which it depends. Okay. Now, if it is a force, it should have a direction, because force, I know it is a vector quantity, and any vector quantity will have a direction. Right? How do I find out the direction of this particular force? So for this, there is a rule. And this is called as the right hand rule. Suppose if you take your right hand, this is the right hand, right? So you take the charge, whatever is the direction of the charge moving,
The charge is moving. So the charge is moving, so I'll represent it by my thumb. And the magnetic field will be represented by all the fingers. And what will be the direction of the force? This will be the direction of force, which is my this way. Right? If the charge is moving in this way, the magnetic field is in the direction of the fingers, the force will be given by the direction in which my palm is pointing. जिस तरफ मेरी हथेली खुली होगी ना, उसी डायरेक्शन पे मेरा फोर्स भी एक्ट करेगा. Clear? Okay. So now you know the direction also. Right. Now let us talk about the characteristics. Before I teach about the characteristics, let me tell you what are the factors on which this force depends. Let us look at this more qualitatively. F जो बोला गया है, it depends upon charge. That means the particle which is entering out here, it should be either the positive charge or negative charge. If there is no charge, there will be no force. हाँ, और इसके पहले एक और चीज बतानी है ना, किसने निकाला इसको? लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाला. ठीक है, तो इन्होंने मेजर किया होगा और इसी की बेसिस पे इन्होंने सारा लॉज बना दिया. तो इन्होंने पाया कि चार्ज होना चाहिए, दूसरा चलता हुआ होना चाहिए, it should have some velocity, and the third is it should make some angle other than 0 or 180 with the magnetic field. Why? Sine 0, 0, sine 180, that is also equal to 0. Right? So these are the factors on which this Lorentz force or force on the charged particle depend. Okay. Now, let me ask you a few questions, right? Now, will the charge, if it is at rest, will experience this force or not? No, it will not experience any force. Why? Because in this formula, if you see and put F is equal to Q into 0 into B into sine theta. See, anything multiplied by 0 is 0. So if a particle is at rest, so it will experience no force whatsoever it may be. Right? Now, if you have got a charged particle, and this charged particle is moving. Now it is having the velocity. Now, if it moves in a direction opposite to that of the magnetic field, see, I have got the magnetic field in this direction as per the diagram, and the particle is moving in a direction which is opposite to that of the field. This is the direction of the velocity, and this is the charged particle you have, and which is moving in a direction which is opposite to that of the magnetic field. In that case, what is the angle? Theta is equal to 180, and we know sine 180 is also equal to 0. अच्छा नहीं पता था इसको, 10 पे नहीं पढ़े हम लोग, कोई बात नहीं, अब जान लो. हाँ, साइन 180 कितना होता है? 0 होता है. So अगर वो opposite में जाएगा या उसी डायरेक्शन पे जाएगा, हाँ, थीटा अगर 0 डिग्रीज भी होगा तो भी कितना होता है? साइन 0 0 होता है ना, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो फोर्स लगेगा ना, whatever the force is, this force is perpendicular to the magnetic field as well as the velocity. What did I say about the rule of the direction? See, the thumb is representing the direction of the charge movement, right? And this is making whatever the angle, this is showing the magnetic field's direction, and you have got the force on the particles is perpendicular to each other. So this particular force direction, it is perpendicular to the magnetic field. It is making an angle of 90 degrees with the magnetic field, and it is also making an angle of 90 degrees with the direction of the positive charge. ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज जो है हमने जो बना तो ली है, इसको यूज कहां कहां पर होगा. ये जो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट हमने जो देखा है, ये जो साइंटिफिक फैक्ट को हम कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, है ना. पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जिन्हें इसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, वहां यूज करते हैं. तो चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वैन आलन बेल्स आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ी होगी. हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली लेयर आयनोस्फीयर में, तो आयनोस्फीयर में क्या होता है कि आयनोस्फीयर में जब हम जाते हैं तो वहां पर एक वैन आलन बेल्ट होता है. आयनोस्फीयर इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स, है ना. तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वहां पर अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है.
ये पता है ना आप लोग को। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं और उन पे फोर्स लगती है, और ये किसकी वजह से होता है? यही लॉरेंस फोर्स की वजह से होता है ना। और इससे बनती है एक खूबसूरत फिनोमेनन, आप नेट पे खोज के देखना, एरोरा बोरेलिस ना, यहाँ नहीं होगा, वो नॉर्थ पोल में होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अपना नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में देखना वहां पर, और मैग्नेटिक साउथ पोल की बात करें, एंड दोनों जगह पर आपको एक खूबसूरत सा फिनोमेनन मिलता है, और वो फिनोमेनन होता है आपका एरोरा बोरेलिस। हाँ, तो वो ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, हाँ हाँ वहां उस एरिया में आपको दिखेगा। ठंड के दिनों में बहुत ही खूबसूरत जो आयन्स होते हैं ना आयनोस्फीयर के, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, और सन का फ्लेयर्स कुछ होता है तो जिससे एनर्जी बढ़ के वो बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न मिलता है। जरूर ढूंढना आप लोग नेट पे, और मेरे को बताना कि कैसा था, ठीक है। अब इसके बाद आती है, अभी बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। हाँ, चाइना और बहुत सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे गॉट टुगेदर एंड दे आर मेकिंग एन आर्टिफिशियल सन। और यहाँ पर भी हमें यही बात, यानी लॉरेंस फोर्स को यूज करके ही बनाया गया है। वो कैसे, हम किसी और क्लास में सीखेंगे। अरोरा बोरेलिस का भी यही एक पर्टिकुलर चीज जो यूज किया जाता है वो है हमारा लॉरेंस फोर्स, है ना। बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन उसमें से एक चीज है कि ये चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ये सब के बारे में जो है सभी कुछ इस लॉरेंस फोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज, let me ask you a few questions, right? So how much is the force experienced by the charged particle when it is rest in the magnetic field? No force. Why? Speed is equal to 0. तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? फोर्स। याद हो गया होगा आप लोगों को, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज F, फॉर्मूला क्या था? Q V B sin थीटा। तो उन्होंने पूछा कि पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट पे होगा तो V कितना होगा? 0। अगर V 0 तो फोर्स भी 0। What is the force acting on a particle when it is moving along the direction of the magnetic field? बेटा इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्रीज हो जाएगा। तो 0 डिग्रीज इसका मतलब फोर्स 0। Does a neutron moving in the magnetic field experience a force? बोलो बोलो, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? No, there is no charge on the neutron, so no force. Okay, negative charges moving along the x direction in the magnetic field is along the y-axis. What will be the direction the negative charge will be deflected? You have to think about it. Put your right hand rules and then say yes. Okay, so you have to go home and learn this topic. Thank you. So children, today we will be studying about what will happen if I place a current carrying wire and an external magnetic field. Okay, so we all know it will experience a force. Okay, अब पता है इसी प्रिंसिपल पर हमारे घर का फैन चलता है, and the same principle the fan is working. Your mother's mixie is working. How? Washing machine is working, everything is working on this principle, right? So what is the principle here? The principle is if a current carrying conductor is placed on an external magnetic field, it is going to experience a force. Okay, how much and which direction is the topic of the today, right? So let us go and study that. Okay, so let me show you. I'm sharing my screen. We know that there is a force. Okay, as I already told you, how much, in which direction, why is the question, right? The first we will study about why it happens. This force is happening because of the interaction between the magnetic field by the current carrying wire. We all know, if you have got a current carrying wire, right? Suppose this is the wire, it's carrying current. So when it is carrying current, it will produce a magnetic field just around it. There is one magnetic field because of this wire. And you're placing this in the external magnetic field, right? And when you're putting it in the external magnetic field, what will happen? There will be an interaction between these two magnetic fields, and this wire, which is made up of a conductor, which is a metal, it will experience a force. Okay, so you got this, why it happens. Okay, now the next is how much this force will be. So this force, see, I have placed this wire, which is orange in color, representing it. It is carrying a current of I, and it is placed in an external magnetic field, which is uniform in B, and the wire which is kept in the magnetic field, that is having a length of L.
And the next is it is making an angle of theta with the magnetic field. So what are the factors on which the force will depend? So the force on the wire depends first. It is on the magnitude of the current, that is equal to I. The second is it will also depend upon the magnetic field, which is V. And the third important factor, that is the length of wire in magnetic field, which is outside. It doesn't matter. The length which is kept inside the magnetic field will matter. And the next one is the sign of angle of theta between the magnetic field and the length. So if I combine all this, what will I get? This force is proportional to the current, the magnetic field, the length, and the sine theta. So if I want to write it in the constant of proportionality k ke saath, I can rewrite this so that it becomes easier for you to remember. That is equal to BIL sine theta. And if you take the units properly, that is SI units. So in SI units, I know K is equal to how much? It is 1. So if you want to put the force formula, it is just what? It is BIL sine theta. Easy to remember. Bil sine theta. Right? Okay. Now, if it is a force, it is a vector quantity. It should have a direction. So what will be the direction? The direction will be given by the Fleming's left-hand rule. There was a scientist called Fleming and he gave us the rule that is the left-hand rule. So what do you have to do? You have to take the left hand in this direction, right? So you can see my hand and you can also see the diagram. Okay. So if you're holding the left hand like this, so the current, see, this is the current, this one, right? This is the current. And that is the middle finger representing the current. Index finger will be representing the direction of the magnetic field. And you will be having, again, the force will be experienced by the thumb, right? So the force will be experienced by the thumb. Current is middle finger. And index finger is representing the direction of the magnetic field and force is represented by the thumb. So you can remember this way, father, mother, child, right? So the thumb is the father, the index finger is mother, and C is the current, right? F is force, M is the magnetic field, and this is the current. Okay, just place this and you will get the direction, right? Okay. So write down the Fleming's left-hand rule, which is going to give you about the direction of the force on a current carrying wire. Here it is. Note kar lo. According to the rule, what does it say? It says that if you have got to open the fingers of your left hand in this way, that means the thumb, the index finger and the middle finger perpendicular to each other, then the direction of the current is indicated by the middle finger. The magnetic field will be given by the index finger, and the force on the conductor will be given by the thumb. Okay, just place this, you get the direction. Okay, now based on this, we are going to answer this question. Now, what is the force? फिर से याद करो, force कितना था? Force is equal to Bill sine theta. What is it? It is Bill sine theta. What is B? B is the magnetic field. What is I? I is the current. L is the length of wire placed in magnetic field. And what is theta? What is theta? Theta is angle between
current element and the magnetic field. Now what is this current element? जैसे अपन को करंट एलिमेंट लेना है ना, तो लेंथ ऑफ द वायर को जिस डायरेक्शन पे करंट जाएगा, उसमें एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा फोर्स का फॉर्मूला। अब आंसर करो क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला छोटा छोटा क्वेश्चंस बना लिया हुआ है। वो जो यहाँ पर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। Yeah, it will experience a force. Name the rule which determines the direction of the force experienced by a straight conductor carrying current in the magnetic field of a permanent magnet. Permanent magnet इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म जो होगा एक्सटर्नल होगा, वायर का मैग्नेटिज्म अलग और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे ना वो बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा रूल बताएगा आपको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने आपको बतानी है। क्या कहता है ये आपको मालूम है, चलो बोलो, मन में बोलो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Okay, now when the force is experienced by the current carrying conductor is maximum, force कब maximum होगा बेटा? force का फॉर्मूला क्या है? F is equal to BIL sin theta। तो डिपेंड किस बात पे करता है? sin theta पे। तो sin theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अपन को पता है 1। कब होता है? कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज का होगा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर है अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा वो मैक्सिमम होगा। देन अंडरस्टूड ना? मतलब वायर अगर इस तरीके से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब फोर्स इस पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, the strength of the force acting on the conductor carrying current related to the current flowing through it? फॉर्मूला क्या कहते हैं? बिल साइन थीटा। इसका मतलब force is directly proportional to current। अच्छा, है ना? समझ गए? अब when is the force on the wire? 0। when is the force 0 on the wire? force कब 0 हो सकता है बेटा? F is equal to BIL साइन थीटा। बेटा अगर करंट को हमने 0 रखा है, यानी करंट को फ्लो नहीं करवाया तो 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। लेंथ तो रहेगा, लेंथ तो रहेगा, है ना? तो और दूसरी बात क्या हो जाती है, जब थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है? हाँ, 0 होती है 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0 एंड साइन 180 इज आल्सो इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास में जो वायर रखा उसको उसी डायरेक्शन में पैरेलल उसी के रख दिया, यानी बी और आई के बीच में एंगल कितना है? 0। या फिर ऐसे रख लो कि आपने बनाया ये मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका करंट कैरिंग वायर है ना उसको डायरेक्शन जो है वो उसकी ऑपोजिट जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट करंट लेके जा रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा इसका? 180। तो दोनों ही केसेस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0 यानी 0 या 180, है ना? यानी पैरेलल जाएगा या एंटी पैरेलल जाएगा, ठीक है। ओके